Okay, so yes, hello everyone, and from today we are starting our financial management. Okay, in our CMA FM part, okay, there is a part of financial management of 50 marks. Okay, first we are starting with the financial management. Okay, and then at a later time, okay, CMA will be picked by Jaram sir. Okay, I'll be your financial management. I'll take your financial management, and CMA part will be taken by Jaram sir. Okay, so today is the first session. So basically, our work. Okay, one thing which I would like to, what I like a kind of warning is there. Okay, see, financial management is not a tough subject. Okay, yeah, but uh, you can say that it is a bit mathematical kind of. Okay, here you have to learn formulas. Here you have to somewhere you might need to derive formulas. Okay, you have to learn few things. Okay, but the key thing over here remains is the practice. Okay, and if you are ready to practice, then quite limited limitations of questions, okay, or any kind of practice won't be a factor from my side. If you are ready to practice more and more, I'm here to help you out more and more. Okay, so just this is a kind of disclaimer that before we start this subject, okay, every day at least, okay, every day at least, not much, then also 4 to 5 sums you have to solve it on a day basis. Okay, so that you get a grip over this subject. Okay, this is not tough. Okay, neither something is asked which is very impossible to do. Okay, it is easy, but it tends to be quite tricky. Okay, tricky in the sense means you have to catch the questions, otherwise solution remains the simple. Okay, so today we're going to start with financial management. Before we start into anything else, this financial management is comprises of two words, correct? One is financial and one is management. Okay, so it is a junction of two words. Now, if I ask you in very layman language, what actually is financial? Where is the word financial derived from? It is derived from With finance. मतलब पैसा. Finance. And finance is what? Finance is nothing but it is money. Correct? Now, what is management? You will say to manage. Correct. Management means where management arises, wherever we need to manage something. Or can I say decision making to it? Correct. What actually management does, what it manages. It manages, or it, or the main task here is decision making. Correct. So if you now if you join the words, is that okay? Money related decision making. Correct. Money related decision making is what all about financial management is. Correct. Now, just wait a second, someone is joining. Okay. Now, if I ask you, what actually is a decision making? हमको डिसीजन कहाँ बनाना पड़ता है और कहाँ हमको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत पड़ती है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये सुमित है. ओके, एंड ही नीड्स टू गो टू हिज ऑफिस which is over here. Correct? And this is the only route available to him. Correct? Now, do you think Sumit needs to decide which way I need to go to office? किस रास्ते से मुझे ऑफिस जाना चाहिए? क्या इनको ये डिसीजन लेने की जरूरत है, या इनके पास डिसीजन लेने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक ही तो रूट है. करेक्ट? इनके पास एक ही तो रूट है, डिसीजन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं. ही हैज ओनली वन रूट टू विच हिज ऑफिस. करेक्ट? सो हियर नथिंग as per decision making is coming. Correct? But now if I say that there are two more ways, one is this way and one is this way. Correct? So now he has 1, 2 and 3 ways. Correct? Now do you think that he needs to decide कि ऑफिस किस रूट से जाऊं?
आपको क्या लगता है? अब सुमित को डिसाइड करना पड़ेगा ना मैं कौन से रूट से ऑफिस जाऊं, क्योंकि अब उनके पास 3 रूट्स हैं, करेक्ट? सो Yes, sir. decision making, where does decision making bonds? Where there are more than one alternatives, करेक्ट? जहां एक से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तहां डिसीजन बनाने की जरूरत ही क्या है, करेक्ट? नाउ व्हेन आई से अबाउट मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, दैट मींस there will be various fields, correct, where we have to decide that which one is correct. Okay, and remember, there is no thumb rule that this should be the rule, करेक्ट? यहां पे कोई मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये डिसीजन सही है, करेक्ट, क्योंकि हर डिसीजन के अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है, करेक्ट? व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हियर आई कैन नॉट make you, or I cannot say you that this is, if this is the situation, this is the decision, correct? What I said, if this is the situation, this is the decision, that means here there is no thumb rule that it should be applied, correct? Now a brief example, you might get confused a bit if I talk like this. Now to raise money, we know there are different sources, correct? There is shares are there, correct? Loans are there, correct? In these are the ways. Now how to go, by which route? By shares, by loans, okay, or by an angel finance? What has to be done, correct? Now right now I cannot say you that shares is the best option, debt is the best option, or raise money from outside, correct? Why? Because each and everything has a different impact on the business, करेक्ट? अगर मैं डेप्ट ज्यादा लेता हूं, करेक्ट, तो मुझे टाइमली रिटर्न्स, मतलब टाइमली उस पर रिटर्न देना पड़ेगा, करेक्ट? आई हैव टू पे टाइमली इंटरेस्ट, नो मैटर इफ आई एम अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस, करेक्ट? बट if I raise equity more and more, there also we have they are also the one who invest in our company, okay, they expect to earn more and more as the year passes by, correct? If I do angel finance, okay, by some equity or by some giving himself power, correct? So that also cannot be done more and more, so that the power doesn't goes from our hand, correct? So हर एक रास्ते के, जो हम यहाँ मनी रिलेटेड डिसीजन की हम बात करेंगे ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे सोर्सेज है, करेक्ट? ये तो मैं अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर एक जगह ना एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होंगे, और किसी भी सिचुएशन में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये सही है ये गलत, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, आपकी कंपनी को क्या जरूरत है, आपकी कंपनी की फॉर्मेशन कैसी है, उसके बेसिस पे डिसीजन बनता है, करेक्ट? सो देयर इज नो थंब रूल टू डिसाइड विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, करेक्ट? नाउ इन द सेम एग्जांपल, इफ आई से दैट this route is the longest one, correct? This one is the longest, correct? This is short, but the road is not good, okay? The road is not good, correct? And suppose in this road some work in progress is going on, okay, may not work. So what Sumit will choose? Sir, second route. Second route. सुमित आप क्या चूज करेंगे? आप छोटा रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ से चले जाएंगे या लंबे से जाएंगे? लंबे से जाएंगे, जो साफ सुथरा हो। साफ नहीं, बहुत ज्यादा भी खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रोड की कंडीशन खराब है, करेक्ट? तो हियर वी कैन हैव डिफरेंट डिसीजंस, करेक्ट? कोई बोल सकता है नहीं मैं रूट 1 से जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं आई गो बाय रूट 2, करेक्ट? सो इट इज कंप्लीटली सिचुएशनल। जिस सिचुएशन में सुमित होंगे, मैं नॉट सपोज फॉर एग्जांपल इफ सुमित इज लेट फॉर हिज ऑफिस, बाय दिस रूट इट विल टेक 1 hour, and by this route it will take only 15 minutes, correct? And he is running late, correct? So at that point of time he won't care about the roads, he will say मैं जल्दी पहुंच जाऊं, बस आज खराब रास्ते से ही जाता हूं, दूसरे दिन टाइम लेके निकलूंगा, करेक्ट? सो his decision changed as per the situation, and that is what we'll do in this whole chapter, okay? So what actually is financial management? Financial management is nothing, is management or decision making related to money. Is that clear? Yes, sir. Okay, now let's read something from our, I hope these notes are available to everyone. It is there in the group. Okay. Finance is called the science of money. It studies the principle and methods of obtaining control of money from those who have saved it and of administrating it by those into whose control it passes.
Finance is the branch of economics till 1890. Economics is defined as the study of efficient use of scarce resource. The decision made by business firm in production, marketing, finance, personal matter from the subject matter of economics. Finance is the process of conversion of accumulated funds to productive use. Okay, just some brief things are given. So what actually they mean to say is that finance is what is nothing, where some accumulated funds, correct, like capitals or what from wherever you borrow the money from outside to put it into productive use, means to produce and run your business. Now see what is it? In simple terms, finance is defined as the activity concerned with the planning, raising, controlling, and administrating of the fund. What actually these all are? Planning, raising, controlling, and administrating. इसको हम collectively क्या बोलते हैं? What we called it collectively? Management. Correct. This is what management is all about. Management plans, management raises, they control, and they administrative. Means they restrict on the uses of funds used in the business. Thus, finance is the activity concerned with the raising and administrating of funds used in business. Okay. Financial management is a managerial activity which is concerned with the planning and controlling of firms' financial resources. Okay. So financial management is what? Is a managerial activity where it is only concerned with financial resources. Okay. Now see, financial management comprises of forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activities related to acquisition and application of financial resources of an undertaking in keeping with its financial objectives. Financial management is concerned with the managerial decision that results in the acquisition and financing of short-term and long-term credits for the firm. Correct. इधर देखिए. Now see, forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. These all are the functions of management. Correct. So, what we are seeing over here, we are seeing that financial, just a second. Just a second. I'll start. Okay. Financial management deals in basically two, but there are three methods. Okay, three fields. Okay, we'll discuss only two right now. After that, I'll add one at a later stage. Okay, two different activities. One is procurement of fund. Okay, and one is utilization of fund. Procurement of fund का मतलब procurement means raising. Okay, and utilization means uses. Correct. Financial management mainly deals with two, and there after later period we'll see that there is one more, that is dividend decision. Dividend decision. Okay, we'll see this at a later period. Okay, in this introduction part only, but at a later stage. Okay, so what are the two main objectives? One is the procurement of funds, पैसा कहाँ से लाए, and one is the utilization of funds. Correct. Now for procurement of funds, what are the different sources? Can anyone try? share, equity share, preference share. Correct. So one we can say. Okay, better to write equity like this. Okay. Equity, it has preference as well. Correct. It can raise it money from debenture or bonds.
debentures and bond. It can utilize owner's fund. Owner's fund. Okay, it can take debt. Okay, it can do. There is some angel financing. Correct. So these are the sources from where they can raise the money. Correct. Okay, so these actually are the ways how to raise the money. But see, there will be one chapter which we'll read about capital structure. Okay, it falls under procurement of fund. How it falls under procurement of fund, I'm going to give you a view of that. Now, suppose for an example, okay, आप लोगों को पता है कि इक्विटी डेप्ट, सिर्फ अभी दो चीजों की बात करें, इक्विटी और डेप्ट, उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? You all are aware of equity and debt, their advantages or their risk. Correct. Now, if I talk about equity, okay, if I talk about equity, then what is that? On equity, what is our cost? We have to pay dividend. करेक्ट, ये कंपनी के लिए यही खर्चा है ना, इक्विटी में कोई इन्वेस्ट करे उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेंस टू अस. करेक्ट. एज वेल एज आवर स्टेक विल आल्सो डिक्रीज. मींस अगर मैं ओनर हूं और मैं कोई मेरे कंपनी में एज इक्विटी, एज अ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है, सो ही इज गेटिंग सम अमाउंट. करेक्ट, ही इज गेटिंग सम शेयर्स ऑफ माय कंपनी, माय स्टेक्स आर आल्सो गोइंग. करेक्ट. बट व्हाट इज डेब्ट? If I talk specifically about debt, okay, debt is Long-term what finance. we take loans from outside on some interest rates. Correct. Now, suppose for an example, I have a very great example of loan. Okay, I need two names. Okay, one will be Manoj and one will be Madhu. Okay, suppose for an example, okay, I have opened, I have a business where I give loans to business. Correct. So at first, Manoj came to me. Okay, Manoj came to me and he said that, sir, I want to open a business. Okay, so I said, what business? He said, he explained everything, whatever business you want. Okay, so I asked him that, okay, so how much amount you need? Okay, what will be the capital? So he said, sir, 20 lakh, but you give 10 lakh, 10 lakh I will invest. Correct? So these were the words what Manoj said to me. Correct? Now suppose for an example, I gave Manoj 10 lakh rupees at a rate of 12%. मार्केट में ये रेट चल रहा था तो मैंने इसी रेट पे मनोज को दे दिया. करेक्ट. रिमेंबर द स्टोरी. नाउ मधु केम टू मी. Okay, Madhu also said, Shivam, I heard you are giving finance to the businesses, so I also have a business idea. I also want to open a business. Correct. So I asked her what are the business. She gave her idea and I asked her that what amount you need, what is your capital. Okay, she said that my capital will be 10 lakh rupees and I need 10 lakh rupees from you. Correct. What happened with Manoj? I gave him 10 lakh at the rate of 12%. Now to Madhu, what I'm doing, I'm also giving her 10 lakh rupees, but at a rate of 18%. आप लोगों को सही लग रहा है? Is this correct? What I have done right now? नहीं. I have not done. Okay. Anyone else has any other view? किसी को लग रहा हो कि नहीं मैंने सही किया? सर ये एग्जांपल वाला नहीं समझ में, मुझे जो बताया बस. What actually happened? क्या हुआ? मनोज मेरे पास आए बिजनेस का आइडिया लेके और वो बोले मेरा 20 लाख का कैपिटल है, 10 लाख मैं डालूंगा, 10 लाख आप डाल दीजिए. मैं बोला ठीक है, 12% मार्केट का ये रेट चलता है, 12%, चलिए 12% पे आपको देता हूँ 10 लाख रुपए, आप बिजनेस चालू करो. मधु भी आई. मधु ने अपना बिजनेस आइडिया दिया और उन्होंने बोला मुझे 10 लाख का कैपिटल चाहिए और आपको 10 लाख देने हैं क्योंकि आपने मनोज को भी 10 लाख दिया. मैंने बोला ठीक है, पर मैंने इनको 10 लाख ना 18% पे दिया. तो क्या ये मैंने सही किया? दोनों को 10-10 लाख दिए, पर मनोज को 12% पे दिया एंड टू मधु आई लेंडेड एट द रेट ऑफ 18% इंटरेस्ट. तो आपको क्या लग रहा है, मैंने सही किया या गलत किया, या मैंने किया तो मैंने कुछ सोच के किया होगा? अगर ऐसा भी दिमाग में आ रहा है कि आपने सर कुछ सोचा होगा तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट. कुछ सोच के किया होगा सर, क्योंकि कुछ सोच के Yes, किया sir. होगा. करेक्ट. Correct. Yes, So I have thought something and that's why I acted like this. Now actually see what happened. Okay, see my logic.
सर इसमें ये भी तो हुआ ना कि मनोज जो है वो आइडियाज लेकर के आए तब आपको बोला इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने Madhu लेंड also, किया no, no, ने। Madhu also came with the idea. That's why I invested. Both gave me the हाँ, idea. और Where, हो सकता है how I, डिफरेंट टाइप्स का आइडिया हो। नहीं, आइडिया में कोई चेंज नहीं, आइडिया में कोई चेंज, आइडिया की वजह से नहीं, मैं बताता हूँ. Now, listen to my logic and then decide whether I did correct or not. What Manoj said to me, his capital was 20 lakh, correct? From here, 10 lakh was given by Manoj himself and he wanted 10 lakh from me, correct? So what I thought is that, चलो इसके बिजनेस में ना I feel less risk. Why? Because he is also investing his 10 lakh rupees. So we'll take care of the funds. ये इसने अपना भी पैसा लगा के रखा है. Okay. यस सर। Okay. So actually what I thought is that here I felt a bit of security, more secure with Manoj. Why? Because not only my funds, Manoj is also investing 10 lakh of himself. So what he will do, he will utilize the fund more carefully. Correct? But what happened with Madhu's case was that, okay, she had a capital of 10 lakh only and she wanted whole from me. So I felt a bit risky कि पता नहीं पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करेगी, बिजनेस चले कि ना चले. So with that thought, I lended her because I took more risk. So I gave 18%. But here my risk was less. So I lended her 12%. अब बताइए, did I did the correct thing or not? This is a business decision. Correct. I did the correct decision. अब बताइए. Yes, Now sir. you all being a business, what do you guys think? I did the correct one. यस सर, दैट्स द करेक्ट वन। Correct. Now see, if Manu raises, if not Manu, sorry, if Madhu raises this fund, okay, whatever amount will be there in our business, it is on debt, correct? So if she does loss as well, suppose for an example, for first year her loss was 2 lakh rupees, correct? Don't you think इतना loss होने के बाद भी she had to pay me 1,80,000 as interest? देना पड़ेगा. Correct? लॉस से रिटर्न का क्या मतलब, वो तो देना ही होगा क्योंकि पूरी इंटरेस्ट तो प्रॉपर्टी। देना होगा ना, वही मैं बात यस कर सर, रहा हूँ. इंटरेस्ट करेक्ट, शुड बी गिवन। देना हुआ तो चलिए. अब एक चीज और बताता हूँ. Now will debt part is over. Okay. Now for equity, okay, I need another two name. Okay. Suppose here is Ruchi and here is Priyanka. दो बहनों की लड़ाई. Okay. Ruchi and Priyanka. Okay, I'm comparing something. Correct. They both are investing in the same company in the same amount. Okay. Both are investing in the same company and the same amount. Suppose this is an okay, this will be one example and this will be another example. Just for comparison, I've done it together. What Ruchi is doing, Ruchi is investing in shares. Okay, or let me say that she purchased 10 lakh was the amount. She purchased 1 lakh equity shares. Equity shares at the rate of 10 per share. Correct? Now, in whatever business, suppose she invested in A Limited. Correct. Now, A Limited invested this money in business, and they earned a profit of, say, for example, they earned a profit of 15 lakh. Correct. So, what Ruchi will get from here? She is an equity shareholder. What Ruchi will earn? I will get the profit, sir. No, dividend. You will get dividend. Okay. So, what you will get? Will get dividend. Correct. Now, suppose for example, you got a dividend of let's take a lower amount. Suppose 12,000. You got the dividend. Correct. Now this was the case of first year. Now let's come to second year. What happened in second year? This year company earned a profit of say 2 crores. Correct. So definitely her dividend will increase. Correct.
Now suppose she earned a dividend of 2 lakh rupees, correct? But what happened in the third year is that it went into losses, correct? So no dividend, exactly. Let's not think about retained earning and all everything, okay? Just keep it simple. Profit हुआ तो dividend मिला, ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिला, नहीं हुआ तो नहीं मिला, correct? Now in the same company, Priyanka gave, okay, 10 lakh was the amount, 10 lakh of loan at the rate of 10%, correct? So in the same A limited. So do we need to see the profit? No. So for the first year, for the second year, for the third year, she will earn an interest of Same every year she will amount. of 1 lakh, correct? Yes. 1 lakh each. So in total, she earned 3 lakh rupees, correct? But what Ruchi earned? If there was Okay, a more profit, I will get the more dividend. Okay, let me do one thing. Let me increase this profit a bit. So for good comparison, suppose she earned 4 lakh rupees dividend. So what she earned? 4 lakh and 12,000. What she earned is 3 lakh. Correct. Now we talked about from our personal point of view. Correct. What actually happened? Ruchi took more risk. Correct. Equity is bit risky. We know. Correct. It is a characteristic of equity. Risk element is there, but in debt there is no risk. Correct. Now let's talk from point of view of company. Now we will not talk about Ruchi and Priyanka's point of view. Now let's talk about in the point of view of company where A Limited, in which A Limited Ruchi has or Priyanka has invested. What happened to them? This was the cost that they have to incur due to Ruchi's investment. Correct. And this was the cost which they have to earn in the second year, for investment what she had made. Correct. And this is the interest what they have paid for say for example Priyanka. Okay, not example, Priyanka was only there. So what do you think is more safer for the company, equity or debt? From company, आप लोग आप खुद एक कंपनी हो, आप बताइए आपके लिए आपको क्या लग रहा है, डेब्ट ज्यादा अच्छा है या इक्विटी ज्यादा अच्छी? Debt. According to me, it's equity. इट्स इक्विटी. मनोज, सुमित आपने क्या बोला? डेट. Debt. ओके, मनोज आप क्या बोल रहे Sir, हैं? according to company, na. अकॉर्डिंग टू कंपनी. इक्विटी शेयर सर. इक्विटी. रुचि आपको क्या लग रहा है? So मेरे से भी equity. You also equity, correct? Equity, sir, because it was the honors fund. Yes. Correct. So we got different answers. Correct. Some said equity and some said debt. This is what decision making arises. Correct. So for a company, ज़्यादा equity भी अच्छा नहीं है. Correct, because they have to pay higher amount of dividend and every year you will expect that this dividend should increase. Correct. आप जब इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप क्या सोच के इन्वेस्ट करेंगे? आज जो कमाए कल और कमाऊंगी, परसों और कमाऊंगी, अगले साल और कमाऊंगी. Correct. So for them risk also increases. Correct. But as per the debt, debt भी company, debt is also not good for company because every year there will be expense of 1 lakh rupees. No matter if they earn profit, no matter if they lose. Correct. So for company, neither the equity nor the debt, दोनों ही ज्यादा देना अच्छी चीज नहीं है. Correct. So what do you think should company do? क्या अगर एक मैं ऑप्टिमल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलोगे? कंपनी को टोटल 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, इनको 50,000 इक्विटी दे दीजिए और इनसे 5 लाख का लोन ले लीजिए. करेक्ट. रफली दिस विल बी व्हाट ऑप्टिमम. ना ज्यादा इक्विटी दिया ना ज्यादा लोन लिया. Our expenses will also decrease. Correct. Similarly, capital structure is all about what structure it should be. Okay, so that neither it's too risky for the company. Okay, neither it's too, what I mean to say, मतलब ज्यादा कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की ना हो. Okay, with this word capital structure, na, there is one more chapter associated with this, which is cost of capital. What is this all about? Cost of capital. Here we calculate the cost of raising the source. Correct. Now, for example, for equity, what is the cost? Dividend. Correct. For debt, what is the cost? Interest. Correct.
For preference as well, what is the cost? It is dividend. Correct. So for each of the different sources, there are some cost associated with it. Correct. So cost of capital determines what actually should be the cost so that overall cost is less. ठीक है, कंपनी में हम कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए. करेक्ट. नाउ सी इट इज इंटरलिंक. नाउ यू विल फाइंड अ लिंक बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमें कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो मुझे एक्सपेंस करना है इन फंड्स को उठाने के लिए. ये समझ में आया कि नहीं? बताइए. थोड़ा बहुत 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 डीप की आगे जरूरत नहीं, बस Yes. थोड़ा बहुत आगे समझ सर. में आना चाहिए. Correct. So what I said that what is my optimum capital structure would be that where my cost of capital will be less. Correct. Because the less cost of capital it will be, the more optimum capital structure it will be. With this, there is one more chapter associated with it, which we call it leverage. What actually is leverage all about? It calculates the risk percentage. Correct. So now see what I said, procurement of fund. The procurement of fund is related to what? Optimum capital structure with less cost of capital and lower degree of risk. यही सब आप देखेंगे ना कि आपको कितना खर्चा पड़ रहा है उठाने का. ठीक है, उससे आपका एक ऑप्टिमम कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें आपका रिस्क भी कम हो. करेक्ट. सो विथ रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड विल रीड दिस 3 चैप्टर. ये आपके सिलेबस में. करेक्ट. अब यहां आते, लेट्स कम टू दिस पॉइंट. Utilization of fund. So with utilization of fund, you will read 2 chapters. रुचि आप बता सकती हैं क्या? Capital budgeting and working capital. working capital management. Capital budgeting and working capital management. These are the 5 chapters which mainly forms your base for financial accounting. Along with that, we have ratio. Okay, we have cash flow statement, we have fund flow statement, and okay. Now, what actually capital budgeting is? Capital budgeting is that how much to invest in fixed asset. Correct. Now, if I ask you something, as per your view, what is best? More and more investment in fixed asset or less investment in fixed asset? Less investment. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका आंसर कैसे बदलेगा, दो. Okay, first I'll give it in Hindi, then I'll convert it to English. समझिए, आपकी एक मिठाई की दुकान है. करेक्ट. आप मिठाई की दुकान, आपकी एक कचौड़ी की दुकान है. करेक्ट. एक बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया आपका ये है. ठीक है, एक अच्छा खासा कैफे जहाँ पे आप कचौड़ी बेचते हो. करेक्ट. तो आप जो कचौड़ी बेचते हो ना, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में बेचते हो. करेक्ट. वो प्लेट की कीमत है 1 रुपए. करेक्ट. तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये डिस्पोजेबल आपका फिक्स्ड एसेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. हुआ ना? नहीं, फिक्स एसेट नहीं. क्यों आपका एसेट नहीं हुआ? ये डिस्पोजेबल है. आप बेचोगे तो इसी से ना. अरे फिक्स्ड एसेट हमेशा फिक्स्ड हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना. आपके बिजनेस में जो आपको हेल्प करेगा, जी. वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं? वो फिक्स एसेट ही हुआ सर. हाँ, वो फिक्स एसेट ही हुआ बिकॉज, क्योंकि यदि मशीन फिक्स एसेट होगा तो डिप्रेसेट होता है. और ये आपका कचौड़ी का दुकान है तो उसमें पेपर जो जा रहा है वो डिप्रेसेट हो रहा है. ये डिप्रिसिएशन में आता है. ठीक है. अब सर एक वो चीज, डिप्रिसिएशन में कैसे आएगा शॉप वाला? अरे मैंने एक तरह से वो डिप्रिसिएशन में नहीं आता. उसके ऊपर मत जाइए. मैं बस इतना बता, ये आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है ना, तो आपका एक एसेट है कि नहीं? आप जो ये यस सर है, डिस्पोजेबल प्लेट बिजनेस है को तो रन करने में वो हेल्प हमारे कर रहा है. लिए सो दिस helpful इज है, एसेट तो फॉर वो अस. करेक्ट. asset- करेक्ट. yes sir. नाउ दिस प्लेट कॉस्ट यू 1 रुपीज. ठीक है, डिस्पोजेबल प्लेट्स. बट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, द अमाउंट विच यू सेल in that is rupees 50. Okay, and you prepare it, say for example, in rupees 24.
24 आपको बनाने में पड़ता है, एक आपका प्लेट का पड़ता है, तो 25 रुपये आपका कॉस्ट होता है और 25 रुपये आप प्रॉफिट कमाते हो पर प्लेट पे। करेक्ट। अब ये मुझे बताओ, किसी दिन कोई कस्टमर आए और आपके पास प्लेट कम पड़ जाए, तो आपके पास आपको कितने का नुकसान होगा? सिर्फ एक कस्टमर का बताइए। 25 रुपए का नुकसान होगा। करेक्ट। अगर आपके पास Yes. प्लेट कम पड़ जाए और एक कस्टमर बिना खाए चला जाए प्लेट की वजह से, तो कितने का नुकसान हो जाएगा? एक 25 रुपए का। और प्लेट कितने की थी? 1 1 रुपए रुपए की। की। तो 1 रुपए की प्लेट जो आपकी एसेट है, ये इतना मैटर कर गई कि आपको 25 रुपए का लॉस दे गई, तो आप बोल रहे हैं आप फिक्स्ड एसेट में लेस इन्वेस्ट करोगे? कैसे चलेगा? जी सर। नहीं चलेगा। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट डिसीजन इज ऑल अबाउट। ओके, दिस इज हाउ डिसीजंस आर टेकन। मैं पहले भी बोल रहा था, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट। अब इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, आपको मैं पेपर मिल बना के दे दूं, एंड यू हैव अ मशीनरी ऑफ 30 lakhs, जो कि आपको पर डे में 110 पेजेस प्रिंट करके दे सकता है। करेक्ट। एंड आप आपका मार्केट में डेली नियर अबाउट 70,000 ही बिकता है, तो आप ऑलरेडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। करेक्ट। तो आप एक और मशीन खरीद के नहीं रखोगे, क्योंकि अगर यहां पे आपने अगर फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका लॉस हो जाएगा। समझ में आया? हाउ विथ सिचुएशंस योर आंसर चेंज, दैट फिक्स्ड एसेट शैल नाइदर बी मोर, शैल नाइदर बी लेस। सो व्हाट हाउ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम, that is what we will read in capital budgeting. Yes, is that clear? यस Yes, सर, sir. क्लियर। Correct. क्लियर है सर। Now working capital management. What is working capital management? This is nothing but day-to-day expenses. Means Correct. current liabilities sorry, current assets minus current liabilities. Day-to-day expenses. अब ये मुझे बताइए, क्या वर्किंग कैपिटल में should I invest more in working capital or less in working capital? केस टू केस वेरिएंस करेगा सर। Case to case अकॉर्डिंग टू variance करेगा। सिचुएशन। Correct. Correct. This was the perfect answer. That it will depend upon the situation. Why? Because if you see that your day-to-day expenses is going to increase, so you'll keep more cash in your hand. Correct. But if you see that your day-to-day expense is not that much, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का डिमांड अभी नहीं आएगा आगे, और तो you can keep less amount. But in that situation, if you invest, if you keep more money in your hand, correct, so what you will lose the interest जो कि बैंक में पड़े पड़े पड़ता, वो आप लूज कर जाओगे अगर हाथ में रखोगे। करेक्ट। So everything depends upon situation, and that is why we say that financial management means money related decision making. Okay. And there is no thumb rule that this is correct and this is not correct. Okay. Now we'll slowly go into our math. This much is clear now, that what actually financial management is. It starts from procurement of fund and it continues till utilization of fund. आप कहां से उठा रहे हो, कितने में उठा रहे हो, आपका रिस्क कितना बढ़ रहा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो रहा है, आपके कैपिटल का टोटल कॉस्ट आपको क्या पड़ेगा, वहां से लेके आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसे यूज करोगे, ज्यादा फिक्स्ड एसेट में डालोगे या ज्यादा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डालोगे, यही दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, इज दिस क्लियर लेडीज एंड सर जेंटलमैन? ये लेवरेज का भैया परसेंटेज वाला बताए थे। रिस्क, हाँ, उसमें रिस्क परसेंटेज कैलकुलेट होता है कि कितना जो मेरे पास मैंने जो बोरो किया है बाहर से, या जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें मुझे कितना कितना लिवरेज, मतलब मुझे कितना, मैं कितना और ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ, कितना नहीं, मतलब कितने रिस्क में हूँ। Okay, once we go through the chapter, we'll get more detailed understanding. Correct. So ओके। let's read the definition again. Financial management is a managerial activity which is concerned with the planning and controlling of firm's financial issues. Planning मतलब procurement. Correct. Planning means procurement and controlling means utilization. कहाँ कितना डालना है. Okay. We have read this decision. अब आप एक बार खुद पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे whatever you have discussed till now. Okay, now let's move on to the objective of financial management. Financial management, as the name suggests, is a management of finance. It is management of finance. It deals with
planning and mobilization of funds required by the firm. There is only one thing which matters for everyone, right from the owners to the promoters, and that is money. Managing of finance is nothing but managing of money. Correct? We have discussed this. Now अब ये सीधा लग रहा होगा. Correct? It seems simple. Every activity of an organization is reflected in its financial statements. Financial management deals with the activities which have financial implications. The very objective of the financial management is to maximize the wealth of the shareholders by maximizing the value of the firm. This prime objective of the financial management is to reflect in the EPS, earning per share, and the market price of its share. Okay, just hold it for a minute. I'll come to this discussion as well. आएंगे इस पे भी, इसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक, अभी के लिए जस्ट होल्ड करिए इसको कि ये क्या बात कर रहा है, कैसे क्या वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, क्या चीज. The earlier objective of the profit maximization is now replaced with wealth maximization. क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और क्यों रिप्लेस हुआ प्रॉफिट की जगह वेल्थ, सारी चीजें बताऊंगा. आई विल डिस्कस एवरीथिंग. Since profit maximization is limited one, it cannot be the sole objective of the firm. The term profit is vague phenomenon, and if given undue importance, problems may arise, whereas wealth maximization, on the other hand, overcomes the drawback of profit maximization. Thus, the objective of financial management is to trade off between risk. ठीक है, कहां रिस्क कम हो वहीं पे ज्यादा जाते हैं. Risk and return. The objective of the financial management is to make efficient use of economic resource, mainly capital. Okay. The functions of financial management involves acquiring of funds for meeting short-term and long-term requirements of the firm, deployment of funds, kahan utilize kare, control over the use of funds, and trade-off between risk and returns. Okay. The next point is profit maximization versus wealth maximization. Profit maximization and wealth. What आप लोगों को क्या लगता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट, सालाना मुनाफा. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे हम वैसे बात नहीं करते. ठीक है, यहाँ पे हम ये बात करते हैं शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना मिल रहा है. करेक्ट. जितना जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना उतना रिटर्न मिलेगा. करेक्ट. नाउ if I say that my main objective is profit maximization, what are the things you feel I'll do and what are the things you feel I'll neglect? ऐसी कौन सी चीजें कि आपको लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा और ऐसी कौन सी चीजें हैं मैं जो मैं अवॉइड कर सकता हूं. चलिए मैं बोलता हूं, आप लोग एग्री कर रहे हैं. ओके, इफ यू गाइज एग्री टू इट देन से, इफ नॉट देन what I'll do maximum is that I'll try to minimize the cost of production. I'll care less for employees. I'll try unfair trade practices. ये 3 पॉइंट पे आप एग्री करते हैं तो? नो. सेकेंड और थर्ड नो. वाई? क्योंकि बिजनेस के रूल्स के खिलाफ है. अरे आप अगर हम रूल पे मत जाइए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे अगर आप खुद भी बिजनेस खोल के आ जाए ना तो आप खुद भी यही करेंगे. मेरे से शर्त लगा लीजिए. सर अगर वो करेंगे तो हमारा फिर प्रॉफिट ज्यादा बस टाइम उसीलिए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया. यही सारी तो चीजें थी जो चल रही थी मार्केट में. अब जो सुमित आप देखते हैं ना वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम होता है, इसीलिए ये चीजें बिजनेस के खिलाफ. लेकिन पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यही होता था.
ठीक है, अगर 1990 से पहले तक की हम बात करें ना, फ्रॉम 1890s पीरियड टू 1990 और लेट 1990 पीरियड, यही होता था। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों रिप्लेस हुआ, या वो व्हाई एक्चुअली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द टर्म व्हिच केम एंड इट रिप्लेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज वेयर आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट ना, somewhere or other I'll be less moral. करेक्ट, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना कम करने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं पे मेरी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो ना, तो मैं मानने को तैयार हूं। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट करते हो ना, उसका कोई कॉम्पिटेटिव मार्केट नहीं है, तो बताइए आप करेंगे नहीं। आप 60 में बेचते हो, बनाते हो 30 में, और आपका कोई कंपटीटर नहीं है, आपकी फैक्ट्री से 10,000 प्रोडक्ट निकलते ही बिक जाता है, तो आप बोलोगे नहीं इसको थोड़ा कट डाउन करो, 30 को 25 ले आओ, 25 को 20 ले जाओ, बोलोगे नहीं। उस केस में अगर जनरली होता है क्वालिटी सही है। क्वालिटी अगर रिड्यूस भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, आपका तो कंपटीशन ही नहीं है। और मैं ये बात कर रहा हूं इन द पीरियड अराउंड 80s 90, क्योंकि 80 90s के बाद ही तो ग्लोबलाइजेशन आया था ना, उसके पहले ग्लोबलाइजेशन था कहाँ। तब तो बहुत सारी चीजें आते थे जो कि सोल होती थी, सिर्फ यही है जो बना रही है। केयरलेस फॉर एम्प्लॉय, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉय पे ध्यान ही नहीं दूंगा, बट समवेयर और अदर आई थिंक दैट अरे मेरा काम कर दो, ओके जस्ट कंप्लीट माई वर्क, ओके दैट विल बी डन। ठीक है, थोड़ी बहुत ओके, विथ केयरलेस फॉर द एम्प्लॉय, मतलब क्या, टॉयलेट्स एंड ऑल, ओके उसको अच्छे से मेंटेन ना करना, ओके नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रूटीन ऑफ द वॉशरूम्स एंड ऑल, ओके नॉट हैविंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इन द फैक्ट्री और कैंप, okay not trying to educate them more and more about how to do the efficient work, just do it and done it। ऐसी बात कर, केयरलेस मतलब ये नहीं कि वो मर गया मैं देख ही नहीं रहा। ठीक है, ट्राई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्हाट एक्चुअली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस, मैं ब्लैक मार्केटिंग करने शुरू कर दूंगा, मैं प्रोडक्ट को बोलूंगा आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, अचानक से लेके आऊंगा जहां मैं प्राइसेस इंक्रीज करूंगा। ठीक है, बहुत क्रूरता से मत देखिए इन सारे पॉइंट को, हल्का सा ऊपर ऊपर से देखिए। ठीक है, what more I can done, now suppose for an example, the factory which I have now has a chimney, okay has a chimney on it, जहां से गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस, करेक्ट। बट क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट है जो इसके ऊपर बिठाया जा सकता है, जिससे वट एवर द गैसेज विल बी रिलीज विल बिकम लेस पॉपुलेटेड, करेक्ट, बट सपोज इट कॉस्ट अराउंड 2 करोड़, एंड वेन यू आर ट्राइंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या आप ये 2 लाख की सामान यहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे? अब बोलेंगे अरे 2 लाख का, 2 करोड़ का खर्च कौन करे? बताइए ना, करेंगे आप? दिल पे हाथ रख के बताइए, यस यू पीपल रिप्लाई, विल यू डू दैट? नहीं नहीं, फैक्ट्री यू नो में वोंट, फैक्ट्री सर। को पैसा दे you देंगे। you won't do that, correct? So that was all that was missing out, or that was all which was happening. Okay, when we try to say that we are trying to maximize the profit, okay, simple word is that i I am being immoral to everything else, to the society, to the surroundings, to the employees. Okay, I'm just, what I am trying is that, okay, now profit maximization means what? Suppose for an example, I purchase the share of 100, correct, and company is giving me 15% return, that means what amount I'm getting back is 15 rupees, correct। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है पता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है दिस 100 should give me 30% so that I get 30 rupees. This is what profit maximization is all about. नहीं लगता आपको यही होगा? अगर मैं ये बोल दूं कि इसी 100 को 200 कर दो एंड मेक इट 15%, इट विल बी 30, बट डू यू थिंक ये सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल है या ये सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल है इसके मुकाबले? सो विथ कम, दिस वन सेकंड इज वन। मोर प्रॉफिटेबल, करेक्ट। सो दिस व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेन यू यूज्ड टू सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, करेक्ट। नाउ यू कैन से मी कि सर इफ दिस, या मनोज कुछ पूछे ना, बताइए। यानी सर कम लागत में ज्यादा मुनाफा। कम लागत में ज्यादा हो, यही तो प्रॉफिट है ना। ज्यादा यस सर। देके अगर एक ही रिटर्न कमाए तो प्रॉफिट तो ना, तो स्टेबिलिटी होगी। ये जो करेक्ट, सर ये जो वर्कआउट हो रहा है सारा, ये कंपनी बेस पर हो रहा है।
कि हाँ, कंपनी में सारी बातें जो हम करेंगे ना, हम कंपनी के बेसिस पे कर रहे हैं। उस यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, हम सारी बातें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते कंपनी का हम कौन सा? हैं। हाँ ऑनर। कंपनी का हम कौन? ऑनर। हाँ, हम ओनर, हमारा बिजनेस, हम अपने हमारा पॉइंट ऑफ बिजनेस से बात करें, हमारे लिए क्या खर्चा है, हम दूसरों का बाद में देखते हैं, अपना पहले देखते हैं। करेक्ट, वी आर इंडियंस. So this what used to happen when we used to say profit maximization. Now many of you can come up and say, sir, if this happens, suppose for example, if reducing the cost of production, that means compromising with the quality, correct? It won't work in the long run. Correct? Long run में काम नहीं करेंगे. How long customers can be fooled? Once, twice, चलिए तीसरी बार, चौथी बार क्या हो सकता है? If you care less for the employees, okay, do you think more and more employees will come? Never. शुरुआत में हो सकता है लेकिन बाद में नहीं होगा. इफ यू ट्राई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इफ इट कम्स टू द आइस, आपको लगता है आपका बिजनेस ग्रो करेगा? डेफिनेटली नॉट. करेक्ट. सो दीज वर ऑल ओके. लेट्स फर्स्ट रीड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन विल गो टू विद financial management. Is basically concerned with procurement and use of funds. In the light of this, the main objectives of financial management are profit maximization and wealth maximization. Profit maximization. Profit maximization is the main objective of business because profit act as a measure of efficiency. Correct? The example which I gave. Correct. If it was this, so this is not profitable for them, but this is profitable for them. In the same amount, if you can earn more and more, that is profitable. This used to act as a measure. कि profit कर रहे हैं, चलो बहुत सही. It serves as a protection against risk. सही भी है. मुझे एक चीज बताइए, आप बहुत अच्छा काम करके क्या करोगे अगर आपका बिजनेस ही ना चले? आपको अभी अगर पैसे की जरूरत है और अगर आप मान लीजिए वेल्थ हो, वेल्थ का आपको पता नहीं है, बता, वेल्थ मतलब अच्छी अच्छी चीजें करोगे आप. अगर आप वहां पैसा लगा दो और आपको पैसा मिले ही ना, तो क्या भरोसा आगे चल के बिजनेस ठप ही हो जाए, बंद ही हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना. प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन में ना रखो तो ये भी तो फॉर्म में पॉइंट जा सकता है कि अभी मुझे पैसे की जरूरत है, अगर अभी मैं प्रॉफिट ना कमा पाया तो 6 साल बाद 7 साल बाद बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो फिर बात का कौन सोचेगा? जो करना है अभी करो, करके निकलो. ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये भी जस्टिफाइड है, गलत नहीं. सर ये, लेकिन ये बिजनेस शॉर्ट टर्म में ना सर, यदि एक बार आपका गुडविल बिगड़ जाएगा तो फिर तो लॉन्ग टर्म नहीं चल बिगड़ सकता। जाएगा, बिगड़ जाएगा, मैं दूसरी बिजनेस खोल लूंगा. हाँ एकदम ठीक है, पाकी एकदम बात करता हूँ, मैं अभी इतना पैसा कमा लेता हूँ कि मुझे बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसा भी तो पॉइंट व्यू पॉइंट हो सकता है, और हाँ, गलत तो नहीं है. ऑन द डिपेंड ऑफ बिजनेस हो सर। सकता है सर, हो हो सकता सकता ऑन द है ना, डिपेंड ऑफ बिजनेस। और होना भी चाहिए. करेक्ट. अगर आपको पैसे की जरूरत है, मुझे सच सच बताइए, अगर आपको पैसे की कभी जरूरत होगी, क्या आप देखोगे क्या सही है क्या गलत है? एक बार भूल जाइए, अपने अंदर की ऑनेस्टी भूल जाइए. आप देखोगे? नहीं देखो. आप बोलोगे नो पैसा सर. मिले बस. आप पैसा मिले बस, ऑनेस्टी मत रखिए. देखिए ऑनेस्ट रहूंगा तो मैं भी बोलूंगा नहीं मैं नहीं करूंगा, और मैं करूंगा भी नहीं. करेक्ट. लेकिन कहीं ना कहीं ये आ जाएगा. अभी मैं भी बैठ के ये बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भी सिचुएशन हूं तो मैं ये भी करूँ. Okay, so what actually I was okay, sorry, I continued more and more in Hindi because I went with the flow. So what actually I was discussing is that why shouldn't I keep my profit maximization as my objective? Because suppose for an example, if I do not keep profit as my motive, and if I keep on earning losses and loss, then definitely after 2-3 years the business is going to shut down. So why not to do whatever it need and let's earn some money? That is also correct. That is not wrong. And that happens nowadays as well. That's why we come to hear about cheat fraud companies. वही यही तो करती है ना वो लोग. ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई होता नहीं. अभी रिसेंट चीट फंड का क्या केस है, कोई बता सकता है? रिसेंटली में हाँ मतलब जब भी हुआ लास्ट क्या हुआ था, किसी ने क्या सुना है? हमारे एक तो बंगाल में हुआ एक शारदा चीट फंड कंपनी, हमारे बंगाल में हुआ रिसेंट. तो ये होता है ना, दिस एक्चुअली हैपेंस. ओके, नाउ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिफेंड किया जा रहा है? आप लोग ओके, व्हेन आई रीड दिस विल कम टू नो एक्चुअली दे आर आल्सो नॉट रॉन्ग. Okay, definitely from honesty point of view, from humanity point of view, they will be wrong. Correct. But if you need something now, you're definitely not going to see how moral it is going to be.
कोई नहीं देखता. I will also not see when I will be in that situation. Let's read. When profit earning is the main aim of business, the ultimate objective should be profit maximization. The future is uncertain. A firm should earn more and more profit to meet the future contingency. मैं अभी इतना पैसा कमा लूंगा ना कि बाद में अगर मेरा बिजनेस ठीक से ना भी चले ना तो मैं चला लूंगा, थोड़ा थोड़ा ही बेचूंगा लेकिन चला लूंगा. करेक्ट. The main source of finance for growth of a business is profit. Hence, profit maximization is required. आप जब तक कमाओगे नहीं, आप बढ़ोगे कैसे, मुझे ये बताओ. करेक्ट. अगर आप 6 साल लॉस कर लो, 7वें साल आपकी हिम्मत है आप फिर से बिजनेस करने की सोचोगे, आप बोलोगे नहीं मैं नौकरी कर रहा हूं. करेक्ट. Profit maximization is justified on the grounds of rationality as profit act as a measure of efficiency and economic prosperity. Correct. आज मेरे पास पैसा है तो मेरे पास सब कुछ. Correct. We say na, when we have money we have everything, but we don't have love. We have ma. Okay. These all are filmy dialogues are there. But actually what happens if you have money na, then there are many things that you will achieve in your life. Okay. Maybe honesty will be missing. Okay. But definitely will achieve something. Earn and you will see how things changes for you. Arguments against profit maximization, which will be more humanity. It leads to exploitation of workers and consumers. We discussed this point. It ignores the risks associated with profit. Profit के साथ क्या risk आता है हम उसको देखते ही नहीं. Risk what? Uncertainty. Future में business चलेगा कि नहीं? We don't see that. Correct. Profit is vague concept and means differently to different people. अच्छा मुझे ये बताइए what actually is profit? पहले मुझे सुमित बताएंगे, फिर मुझे रुचि बताएंगे, फिर मुझे मनोज बताएंगे. अलग अलग. आपके हिसाब से प्रॉफिट क्या है सुमित? हम तो बताए थे ना सर कि जैसे हमारे सालाना प्रॉफिट हमको क्या होगा, या एक्चुअल प्रॉफिट हम किस चीज, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें रेवेन्यू कितना आ रहा है जो फोरकास्ट के तरफ से चलिए मैच ठीक कर है, रहा है. समझा. रुचि, व्हाट इज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू यू? मैथ के कैलकुलेशन मत बताइएगा, टोटल कॉस्ट माइनस सेल माइनस टोटल कॉस्ट, ये सब मत बताइए. मुझे लग रहा था आप बोल सकती हैं. नहीं, हम भी सुनेंगे, हमको भी हंसी. I have spent 6 months with you, so I know you. बताइए आपके लिए प्रॉफिट क्या है? आप कैसे कहेंगे मैं प्रॉफिट में हूँ? सर जब मार्केट मेरे शेयर का मार्केट प्राइस एक्सीड करेगा तब. थिंक सो. चलिए ठीक है. मनोज, व्हाट इज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से प्रॉफिट क्या है? मेरे हिसाब से प्रॉफिट है सर, पहला रुचि का जो आंसर है वो सही है सर. बट लेकिन वो बिग माने कंपनी है तब, और ये स्मॉल कंपनी है तो सर जो फंड का जो है अरेंजमेंट, आपका मार्केट में ज्यादा लोन नहीं है, ज्यादा आपका डेटर है, लोन आपके देने नहीं है बट लेने ही है, डेटर करें, तो फिर सर सही है, फिर वो प्रॉफिट होगा. चलिए. सो सी, now only I asked 3 of them and I got 3 different answers. Correct. So no one is certainly very sure what actually profit is. If you earn more, is that profit? If our market price increases of the share increase, is that profit? Or if I have less loan or less credit from the market, okay, I have done everything and so I am like financing everyone. Is that profit what I am earning? See, यहीं पे 3 लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन हो गया कि मैं समझ नहीं पाया कि आप तीनों अलग अलग मतलब क्या एक्चुअली प्रॉफिट का मतलब है. सो इट इज कुछ नहीं होता. क्या आप बिजनेस करोगे तो आप कमाओगे, जब ज्यादा कमाओगे तो आप प्रॉफिट बोलते हो, आप ये भी बोल सकते हो. करेक्ट. सो प्रॉफिट इज अ वेग कंसेप्ट. ओके, देयर इज nothing which has defined profit except our math which says that sales minus total cost is equal to profit. Okay, correct. It is a narrow concept as a cost of social and moral obligations. The examples which I gave about the chimney. Thus, profit maximization as an objective of financial management has been considered inadequate. आपको भी लगा ना इतने सारे डिस्कशन करके नहीं, ये सही नहीं है. करेक्ट. यू गाइज itself at this level feel that no, this is not correct, this is not to be done. आपको भी लगा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए. करेक्ट. with this now comes wealth maximization. now what actually सर wealth maximization? हाँ बोलिए. ये मतलब एफएम में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल सोच है वो यहाँ पे नहीं चलेगा. नहीं यहाँ पे जब भी सिचुएशनल डिसीजन लेना है जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल. सिचुएशन करेक्ट. या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट से. करेक्ट.
Now, what actually is wealth maximization? Wealth maximization is considered as the appropriate objective of an enterprise. When the firm maximizes the stockholder's wealth, the individual stockholder can use wealth to maximize his individual utility. Wealth maximization is a single substitute for a stockholder's utility. Now, actually, what they're trying to say is wealth management, wealth maximization. Suppose Sumit has, and here I'll take the name of Madhu. Okay, Sumit has purchased 1,000 shares at the rate of 15 per share. Okay, and Madhu has purchased 1,000 shares at the rate of 15 per share. Same, correct? Yes, this is give me a second. Give me a second. Sir, GST. Okay. Okay, so what we're discussing about wealth maximization. Okay, now Sumit has 1,000 share of 15 rupees and Madhu also have 1,000 shares of 15 rupees. Okay, now how actually wealth is calculated? So Sumit's wealth will be calculated number of shares into market price per share. Okay, now what is his wealth right now? It is 1,000 into 15, so it is 15,000. Correct? Madhu also have the same. So what's Madhu's wealth now? It is also 15,000. Correct. Now they have invested in two different companies. Suppose he is in B Limited and she is in A Limited. Okay, because ladies first, so I've given A to Madhu and B to Sumit. Okay. Now Madhu's company used to follow profit maximization. Profit maximization. But here it was wealth maximization. Because it is profit maximization, so it might be possible that in the next, say for example, 2 years, okay, her value will increase to 1,000 shares at the rate of 20 per share. Correct? Because it is profit maximization, तो शुरुआत में कुछ तो profit कमाएंगे. Correct? So what is her wealth? Her wealth will be 20,000. Correct. But because they are following wealth maximization, and we'll read in wealth maximization where we try to create a good impact on a long run. Correct. So after 2 years, it might be possible that Sumit's share value might increase more and it might become not 20, I'll write 25. 25 per share. So what is his wealth right now? It is 25,000. So you got actually what actually is wealth all about? Wealth is number of shares you have and current market price of the shares. Okay, इससे आपको wealth पता चलती है, and that's what wealth maximization tries to do. It do not tries to increase, but what actually it will try? It won't try to do this one. Okay, they won't be trying to do this. They'll try that her 100 rupees share will become 200 rupees, and on that 200 rupees, same rate of return will give him 330 rupees. Okay, this is what wealth maximization is all about. Is that much clear or not? Then we'll go to the reading part. Yes, sir. Okay. A stockholder's wealth is shown by stockholder's wealth, number of shares owned into current stock price per share. Higher the stock price per share, the greater will be the stockholder's wealth. Now, what are the arguments in favor of wealth maximization? Due to wealth maximization, the short-term money lenders get their payments in time. The long-time lenders to get fixed rate of interest on their investment, because business is running good, so everything will be done in a true and fair way. The employees' share in the wealth gets increased because better they will be taken care in a more better way.
various resources are put to economical and efficient use. Okay, now after wealth maximization, you will feel like that God itself is coming and doing this business. Everything is so good. Okay, but what are against wealth maximization? It is socially undesirable. सही बात है ना? पैसे रखो और वेल्थ रखो, आप किसको चुनो? आप बोलोगे मुझे जो जरूरत है मुझे वो चाहिए, तो सोशली अनडिजायरेबल है ना, ऐसा लगता नहीं है कि नॉर्मली हो सकता है। ये जो हमने पॉइंट पढ़ा, उसीलिए मैंने बोला ना, ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद का बिजनेस, भगवान ही बिजनेस कर, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये सोशली अनडिजायरेबल। ओके, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, वी से ना, वी यूज दिस वर्ड, टू गुड टू बी ट्रू। सो इट सीम्स लाइक दैट। It is not a descriptive idea. Okay, not a descriptive means nothing is defined very clearly over here, that what actually they will try to do, whether they will try to maximize the wealth of shareholder, or whether they will try to do more and more social obligations. So what actually should be wealth maximization is not yet defined. Now see, only stockholders wealth maximization does not lead to firms wealth maximization. स्टॉक होल्डर का अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर का सिर्फ मार्केट प्राइस बढ़ा जा रहा है, उससे मेरे बिजनेस को क्या खासा फर्क पड़ेगा? शेयर मार्केट का प्राइस ही तो बढ़ रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी ऑब्लिगेशंस करने में मैं इतने खर्चे कर दे रहा हूं कि बिजनेस मेरा उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके शायद कर सकता। सही लग रहा है कि नहीं? ये बात सही लग रही है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? कि हो सकता है मैं और खर्चों पे इतना ध्यान दे रहा हूं, या फिर मैं उन पे भी इतना ध्यान दे रहा हूं कि जो प्रॉफिट मेरा हो सकता था ना, वो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन जहां मैं 2 करोड़ कमा सकता हूँ ना, वहां शायद मैं 1.5 करोड़ ही कमा रहा हूँ, क्योंकि 50 लाख मेरे इधर उधर खर्च हो जा रहे हैं। सही बात है। तो सही है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक होल्डर का ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोल के आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉफिट ले आओ, पॉइंट ले आओ, और उससे फर्म का भी वेट बढ़ रहा है, जरूरी नहीं। बढ़ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वी आर इनटू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज अ डिसीजन मेकिंग। सो आई माई सेल्फ वोंट से एनीथिंग वेरी क्लियर दैट दिस हैज टू बी डन और दैट हैज टू बी डन। हियर इट विल बी एवरीथिंग, मे बी, may not be. Okay, so what I said in Hindi is that only stockholders wealth maximization won't lead to firms wealth maximization. It is not necessary. Suppose your market price is keeping on increasing, okay, so definitely your business is growing, correct, but it might be possible to follow all other social obligations. Your expenditure done by you is becoming more and more. So thus by that, if you could have earned 2 crores profit, now you are only earning 1.5 crore, because 50 lakhs you are doing extra expenses on that item, correct. But again, when we think about from point of view of morality or business growth, then definitely that will help. Okay, the objective of wealth maximization is endangered when ownership and management are separated. Why? Because ownership is what completely different, where ownership means stakeholders, and management is what is about allocation of money. Correct. Ownership, what stockholders will try to do, or what they will expect. My wealth should increase. I should get more and more money. But what management is trying to do, will be trying so that we can, if we are earning more and more profit, so let's retain some earning. Okay, let's invest in some further projects. Let's use it from other things. So when ownership and management are separated, na, you will find out that wealth maximization point is bit ignored. Okay, is that much clear to you? Profit maximization and wealth maximization. Now it will be on your work to read it once. After the class, you will have a clear clarity. Yes, ladies and gentlemen. Now can I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll read about scope of financial management, and this will be our last topic for the day. Okay. After that, we'll continue in the next session. Scope of financial management. Financial management today covers the entire gamut of activity, means all activities and functions given below. The head of finance is considered to be the most important ally of the CEO, Chief Executive Officer. In most of the organization, this will be CFO, okay, Chief Financial Officer, okay. Sir, Chief Finance, yeah, Chief Financial. Chief Financial. Okay, this will be CEO. Okay, this sentence is as per that he will be important ally to the CEO of the business. Okay,
in the organization and performs strategic role. His responsibility includes. Now, whatever responsibilities we'll read now, somewhere or other will feel like they are one and the same, and we have discussed on. Okay, so at first I'll read it. If you find it difficult, stop me there. I'll explain that. Estimating the total requirements of fund for a given period. That कितने पैसे चाहिए कंपनी में, ये सारे estimations. Raising funds throughout various sources, both national and international, keeping in mind the cost effectiveness. Correct? Means procurement of fund. Investing the funds in both long-term as well as short-term capital needs, with capital budgeting and working capital. Funding day-to-day working capital requirements of the business. Okay. Collecting on time from debtors and paying to creditors on time, because this is all about money. So all these decisions and everything will be taken care by the financial management or financial managers. Managing funds and treasury operations. Definitely. Ensuring satisfactory return to all the stakeholders. Correct. So what actually here they mean to say, suppose when you earned a 20 rupees profit, you gave them 5 rupees. Now when you are earning 25, you are giving 6. When you are earning 30, you are giving 7. Suppose suddenly you earned 60. Correct. You earned 60. So what you will do? आप बोलोगे बढ़ा दो सर. Correct. आप बोलोगे सर 20-30 दे दो. You will say ना, definitely. But suppose in the next year you earned only 10. आप कैसे दोगे? So what actually is the convention is that never, if you have gone to 20-30, never ever reduce from below 20 or 30. Why? Because then the stakeholders will feel like that this business is declining. Correct. So actually what should be done? Here also only 8 should be paid, so that in the next year, if you earn less profit, okay, you can take something from this profit and something from this and you can make it 9. Is that clear? मैं क्या बोलना चाहा? Clear हो? ये बहुत बड़ा पॉइंट है. ये मैं मजाक मजाक में बोल गया, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है. समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से बोलेंगे मैं प्लीज. फिर से बताता हूँ. अरे प्लीज बोलने की जरूरत, मैं फिर से बता. समझिए, आप 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप 3 रुपए डिविडेंड दे रहे हो. ठीक है. आप 40 का कमाओगे तो आप 6 रुपए दोगे. करेक्ट. आप 60 कमाओगे तो फिर आप थोड़ा बढ़ा दोगे, 9 कर दोगे. करेक्ट. सपोज अचानक से आपने 1.50 अपने प्रॉफिट कमाया. ठीक है. तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे? अरे इतना कमाया तो एक काम करो 25 या 30 दे दो. करेक्ट. मान लीजिए अगले साल में आपने सिर्फ और सिर्फ 70 कमाया, तो आप 25 और 30 तो नहीं दे पाओगे. ज्यादा की तो बात ही छोड़ो, 25-30 ही नहीं दे पाओगे. करेक्ट. तो लॉजिक ये कहता है ना कि आप अगर एक बार 25-30 दे दिए ना, तो आप उससे कम कभी मत जाइए. मतलब 24 या 29 इस फिगर में फिर मत जाइए, वरना ये क्या डिपिक्ट करेगा कि एक बार तो उनको 25-30 मिला, फिर उनसे कम मिल रहा, मतलब वो सोचेंगे कि बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है. इससे आपके मार्केट में गुडविल खराब होगी, आपके मार्केट प्राइसेस शेयर के गिरेंगे. तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है कि यहाँ 25-30 ना देके ना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 12 ही दे, ताकि यहां जब मेरा 70 हुआ ना, तो मुझे 13 देने में अगर कोई दिक्कत हो ना, तो यहां से जो बच गया वहां से मैं यूटिलाइज करूं. मतलब एक बार अगर आप हायर लिमिट, एक लिमिट टच कर जाते हो ना, तो अगले साल उसके नीचे मत जाइए, क्योंकि वो बुरा भी दिखता है ना. ऐसा लगता है आपका बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट में बात फैली, तो आपके मार्केट शेयर्स कमते रहेंगे. समझ में आया? और अगर आप एक बार कम दोगे और दूसरी बार अगर आप बाई चांस कम कमाते भी हो, तो आप जो ज्यादा कमा के रखो ना, वहां से एडजस्ट करके दे सकते हो. लेकिन एक बार दे दिए तो फिर एडजस्ट नहीं कर सकते. समझ में आया ना? यस सर. यस यस, क्लियर है करेक्ट. सर. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मजाक मजाक में मैंने समझा दिया. ओके. नेक्स्ट, पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. ओके, whatever you have taken from outside, whatever you have borrowed, pay interest and on time as well. Repaying lenders on due date. Now you'll see whatever points are there, these are not very bigger points or very critical points. These are simple things. Maximizing the wealth of shareholders over the long run. Okay. Interfacing with capital markets. Awareness to all latest development in the financial market. Okay, what more developments have been done, what more theories have been discovered,
they should all be known about that so that they can take more better and more efficient decisions. Increasing firms' competitive financial strength in the market, definitely. Competitive advantage financially रखने की कोशिश करेंगे. Adhering to the requirements of corporate governance. Wherever some rules and regulations are there, they will follow that as well. Now see, the above aspects of financial management are covered greater details under different chapter, like we read capital structure, cost of capital, leverage, capital budgeting, working capital management. These all are separated. सब अलग अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, हमारे हर एक चैप्टर करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा क्यों हम कर रहे हैं, वहां आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा प्रोक्योर करने में क्या खतरा है, अरे कितना कॉस्ट जाएगा सर, ये जो बोल रहे हैं मेरा इतना लॉस हो जाएगा, मेरा उतना लॉस हो जाएगा, क्यों बोल रहे हैं, आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. ओके, from the very first which I have been saying, it will incur cost, it will incur loss. Why actually I am saying, once we move on to the respective chapters, okay, you yourself will be ready to analyze what actually is happening. A prior definition, the scope of financial management fall into three groups. One view is that finance is concerned with cash. At the other extremes is the relatively narrow definition of financial management is concerned with the raising and administering funds for an enterprise. The third approach is that it is an integral part of overall management rather than staff specially concerned with the fundraising operations. Simple चीजें बोल रहा है, तीन अलग अलग view है. One says that it is nothing but the cash. One says that where you manage the funds of enterprise, and third says that it is an integral part of overall management which is concerned with raising of funds. One and the same thing. In this connection, Isra Solomon says that in this broader view, the central issue of financial policy is the wise use of funds. Correct, that everything is used wisely, nothing has been done with some bad intentions. Or one apparently straightforward approach is to define scope of financial management as something which embraces those areas in which the finance officer or treasurer operates. It belongs mainly to those areas where finance officer or treasurer operates. The trouble with this empirical definition is that responsibilities carried out by company treasurers vary quite widely from one organizations to another. Correct, because सबके अपने अलग अलग रूल्स होंगे, अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, अपने अपने अलग अलग गोल्स होंगे. करेक्ट, तो उस हिसाब से सबको अपना अपना अलग अलग decision making करना पड़ेगा. Okay, so what actually we got today, we saw the overall view. Okay, what actually is a financial management, what it is more concerned with. Okay, how all of the chapters are differentiated and what are the basis for it. We just went through a very basic detail about the financial management. So for today's session, I'll keep it up to here, and with the next session we'll continue with relationship with other business function, and there are more theories. Okay, as more and more we'll move on, we'll see more and more things. Okay, so maybe 2 to 3 more sessions will be theory, and then we'll move on to the practical aspects. So for today, I'll end it over here. So those who are seeing it on record, in case of doubt, I'm there, and otherwise, so see you in the next session. Till then, bye bye. Thank you for joining. Have a great day.